students to standard 10th maths or science queries session 3. Alright, I've got two questions from Mohit Vinde, one from trigonometry and other from surface areas and volumes. Let's see this trigonometry sum. Okay, using identity cosec square A is equal to 1 plus cot square A, prove that cos A minus sin A plus 1 whole upon cos A plus sin A minus 1 is equal to cosec A plus cot A. Children, you have to be very careful. See what is left hand side? I am writing left hand side. Left hand side is cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1. And if you look at right hand side, children, you have cosec and cot. Left hand side expression has cos and sin. And what you have to prove on right hand side expression has cosec and cot. You can easily convert cos and sin into cosec cot or even sec and a tan. Now look at this. Cosec A is 1 upon sin A and cot A is cos A upon sin A. Children, look at this denominator. Look at this denominator. Denominator is sin. So when you want to convert cos and sin into cosec and cot, you should divide the ratios, that means numerator and denominator, by sin. So I am doing that. Left hand numerator cos A minus sin A plus 1 whole upon denominator cos A plus sin A minus 1. Children, I am dividing numerator by sin A, and so the denominator also by sin A. Now you see the change. This is equal to, split the terms, cos A upon sin A minus sin A upon sin A plus 1 upon sin A whole upon cos A upon sin A plus sin A upon sin A minus 1 upon sin A. Now look, cos upon sin, that is cot A, minus sin upon sin, that is 1, plus 1 upon sin, that is cosec A, upon cos upon sin, that is cot A, plus sin upon sin, that is 1, and 1 upon sin with minus sign is cosec A. Correct? So you have converted into cosec and cot. Now you got cosec and cot. I'll write in proper order. यहाँ cosec plus cot चाहिए. देखो न्यूमरेटर में cosec थीटा और cot थीटा है. So I'm writing cosec A plus cot A और minus 1 constant term last में. I'm just rearranging the term. पहले cosec A ही लिखूंगा. So that is minus cosec A with sign plus cot A और plus 1. आपको ये तो नहीं मिला. There are 3 terms upon 3 terms. Okay, now comes the use of identity. Children, cosec square A is equal to 1 plus cot square A. मुझे substitute करना है 1 के लिए. So cosec square A minus cot square A is equal to 1. कौन से 1 के लिए substitute करेंगे? ऊपर या नीचे? Alright children, अब देखो, कभी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, ये नहीं. Prove that this left hand side is equal to 1 upon cosec A minus cot A. Of course, in this sum you have to prove this, but sometimes you may be asked this. आप देखो, यहां whole upon 1 समझ सकते हैं. जो प्रूव करना है वो न्यूमरेटर में है और जो प्रूव करना है डिनोमिनेटर में. एक्चुअली 1 upon डिनोमिनेटर में नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये ट्रिक समझने के लिए. जो प्रूव करना है वो डिनोमिनेटर में है, जो प्रूव करना है न्यूमरेटर में है. तो न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर वाला 1 के लिए सब्स्टिट्यूट करो. यदि डिनोमिनेटर में वो 2 टर्म्स है तो डिनोमिनेटर वाला 1 के लिए सब्स्टिट्यूट करो. यहां बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, कोई भी एक 1 के लिए ही सब्स्टिट्यूशन करना है. फॉर दैट यू हैव टू बी एक्सपीरियंस एंड बिट ट्रिकी. वंस अगेन हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. जो राइट हैंड साइड है 2 टर्म है वो न्यूमरेटर में है. सो न्यूमरेटर वाला 1 के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये.
यदि हमें ये प्रूव करना होता तो वो टू टर्म्स डिनोमिनेटर में है, जो प्रूव करना है वो, तो हम डिनोमिनेटर वाला 1 के लिए सब्स्टिट्यूट करते। चलिए इसको मैं लिखता हूं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, वो ब्रैकेट में ले लिया, आगे प्लस है सो नो चेंज इन साइड, माइनस इसके लिए लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1, और उसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं। नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फैक्टर्स निकालिए। दिस इज कॉसेक ए प्लस कॉट ए और माइनस इसके दो टर्म होंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक्चुअली दो फैक्टर्स, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल अपॉन दिस रिमेन सेम माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1, 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन। चिल्ड्रन यहां cosec a plus cot a, cosec a plus cot a is common, there you are, cosec a plus cot a कॉमन निकाल दिया, और ब्रैकेट में यहां रहेगा 1 क्योंकि वो कॉमन में चला गया, ये माइनस और ये साइन विल चेंज, आई राइट डायरेक्टली चिल्ड्रन, माइनस दिस टू टर्म्स आई विल चेंज द साइन, माइनस cosec a और माइनस cot a becomes प्लस cot a होल अपॉन। चिल्ड्रन यहां 1 में पहले लिख रहा हूं, ये टर्म 1 पहले, फिर माइनस cosec a और आखिर में प्लस cot a, डिनोमिनेटर के 3 टर्म्स रीअरेंज किए, देखो ये कैंसिल हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a, एंड दैट इज RHS प्रूव। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 2 cubes of volume 64 centimeter square are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. Now this is cube. Correct? ये एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम इज 64 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट? ऐसा ही वॉल्यूम वाला दूसरा क्यूब हम डाल रहे हैं चिल्ड्रन। सो ये क्यूबॉइड हो गया, दो क्यूब दे आर जॉइंड एंड टू एंड, सो ये क्यूबॉइड हो गया, दिस बिकम्स अ क्यूबॉइड, एंड यू आर सपोज टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। चिल्ड्रन आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहले तो ये क्यूबॉइड की लेंथ ढूंढ लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 64 centimeter cube, that is cube and not cuboid. L, so volume is L cube, that is 64, therefore L is cube root of 64 and cube root of 64 is 4, correct? 64, 2 32s are 2, 16s are 2, 8s are 2, 4s are 2, 2s are 2, 1s are, cube root मतलब ट्रिपलेट चाहिए, so इसमें से 2 निकला, इसमें से 2, 2 2s are 4, so you got the length. Children, now you have to be tricky. You are supposed to find the volume of this cuboid. Children, now volume of cuboid is equal to, children, ये जो क्यूब था उसके 5 फेसेस आर इंटैक्ट, दूसरा क्यूब का 5 फेसेस आर इंटैक्ट, ये दो जो फेसेस थे एक दूसरे से चिपक गया, so the surface area of cuboid lost 2 faces. फर्स्ट क्यूब के 6 फेसेस है, सेकंड क्यूब के 6 फेसेस है, दोनों से एक एक स्पेस गए, करेक्ट? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल बी, सॉरी नॉट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ढूंढना है, आई एम सॉरी। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 5 faces of cube plus 5 faces of second cube. So that gives you 10 times the surface area of face of cube. All right. So 10 times. What is the surface area of face? L square. That is 10 into L is 4 square. That is 10 into 16, and that is 160 centimeter square. I hope I have not made complicated. Okay. Now please try to understand. What is the surface area of cuboid?
Now this cuboid is formed by two cubes joined end to end. So it has lost one face from each. So surface area of cuboid is equal to surface area of 5 faces of first cube plus surface area of 5 faces of second cube. So 5 plus 5, 10 faces, and the surface area of each face is L square. I hope that is clear. So proceeding further, now I've got a question from Amit from chapter Arithmetic Progression. Alright. In an AP, the sum of third and seventh term is 6. Children, write it nicely. Sum of third term, so that is A3. Seventh term, that is A7. And what is the sum of these two terms? Third term and seventh term, 6. Alright, children. Here, A3 is what? A plus 2D. Plus A7 is what? A plus 6D. I didn't use the bracket because of plus sign. And that is equal to 6. So this gives me A plus A 2A, 2D plus 6D gives me 8D, and that is equal to 6. So 2 is common, children. So A plus OD is equal to 6. 2 ones are 2 3s are. Therefore, A plus OD is equal to 3. I got a linear equation in two variables A and D from the first condition. Now what is the second condition? And their product is 8. And their product is 8. So A3 multiplied by A7. The product is 8. Find the sum of first 16 terms. You are supposed to find S16. That is 16 by 2 into 2A plus 15D. So again you need the value of A and D. मिल जाएगा. देखते हैं. What is third term? A plus 2D. What is the next term into A plus 6D? That is equal to 8. Alright. Now children, अब क्या करोगे? तकलीफ तो है, right? Put the value of A from here. What is A? 3 minus 4D, right? A की वैल्यू from 1 और आगे है plus 2D into A की वैल्यू 3 minus 4D, right? And plus 6D, that is equal to 8 by 1. We have substituted the value of A 3 minus 4D in this equation. So this gives me 3 minus 2D into 3 plus 2D. That is lovely expansion. A minus B into A plus B. So 3 square minus 2D square, alright, is equal to 8. So 9 minus 4D square is equal to 8. So 9 minus 8 is equal to 4D square. Therefore 1 is 4D square. Therefore 1 upon 4 is D square, i.e. D is equal to plus or minus 1 upon 2. Now this is very interesting. D is plus or minus 1 upon 2. Okay, we can take D equal to 1 upon 2. Taking D is equal to 1 upon 2. So i.e. AP is in ascending order, है ना? AP is in ascending order. जब D पॉजिटिव होता है तो AP ascending order में होता है. नेगेटिव लेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में. टर्म्स तो वही रहेंगी, राइट? ओके चिल्ड्रन, फाइन. सो पुट द वैल्यू देन. A plus 4 into D 1 upon 2 is equal to 3. 2 ones are 2 twos are. So A is equal to 3 minus 2. So A is equal to 1. So children, A equal to 1 and D is equal to 1 half लिया हमने. Now S16, sum of 16 terms, is 16 by 2 into 2A plus 15D. 2 ones are 2 eights are. That gives me 8. 2 into A, that is 1. Plus 15 into D, that is 1 upon 2. Alright, so that is 8 into 2 upon 1 plus 15 by 2. LCM 8. LCM is 2. 2s are. So 2 2s are 4 plus 15. That is equal to 8 into 19 by 2. 2 ones are 2 4s are. 19 4s are 40 and 36. So 76. So the sum of first 16 term would be 76. आप असेंडिंग ऑर्डर में लोगे तो 76 आएगा. डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे तो भी टर्म तो वही रहेंगे. सो इट विल बी ऑल्सो 76. सम विल बी 76. इज दैट क्लियर? ओके. नाउ देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम रिया यू फ्रॉम acid, base and salt, that is science.
Okay. How acid and base can be tested in laboratory? Explain. So children, in laboratory, we can see, I'm just going to explain the answer. वो presentation आपको बड़ी अच्छी तरीके से करना होगा. I cannot present the whole answer in this space here. So I'm explaining. Okay. There are various ways by which a given solution can be detected or determined as acid or base in the laboratory. There are different tests. One, litmus paper. Second, pH paper. Third, pH indicator. Fourth, pH meter. And fifth, indicators. So you need these 5 things in the laboratory, any one of the 5 things, and you can determine whether the given solution is acid or base. Alright, you know very well about the litmus paper. Take blue litmus paper and moist one and put it in the given solution. If it turns red, it is acid, and if it remains blue, it is base. Or you may pick up the red litmus paper and dip it, moist one of course, and dip it in the solution. If the red one remains red, then it is acid. But if red one turns blue, then that solution is basic. Alright. Now pH paper. Yes, once again, it's just a paper like litmus one. Pale color, pale yellow color. Alright. Dip it in the given solution and then check the color change. There is band of colors given to you, children. Band of colors given to you. ऐसा एक बैंड होता है डिफरेंट कलर्स का. कलर 1, कलर 2, कलर 3, कलर 4, कलर 5, ऑरेंज, ब्लू, रेड, ग्रीन, ऐसे कलर्स होते हैं. नाउ आपने पीएच पेपर को डुबोया अंदर. ऑलराइट, आपको ये कलर मिला, सपोज के ऑरेंज, तो वहां अप्रोक्सीमेट पीएच दिया गया है. नाउ यू नो इफ पीएच इज मोर देन 7 देन इट इज बेसिक, एंड इफ पीएच इज लेस देन 7 देन इट इज एसिडिक. करेक्ट चिल्ड्रन? ओके. सो पीएच पेपर हेल्प्स यू to find out whether the given solution is acidic or basic. Then we have pH indicator. ये पेपर है, ये pH indicator liquid होता है. It is a liquid. Alright? तो आपके पास जो solution है उसमें few drops of indicator drop करना होता है. उससे वो solution का color बदलेगा और इसी तरह का band of colors होगा. आपका solution उस color से match करिए or you will get approximate pH, and if it is suppose 3, approximate pH of that solution is 3, you can say it is acid because the pH is less than 7. Or suppose 11 पाया गया तो it is more than 7, so it is basic. Suppose 7 पाया गया तो it is neutral, it is neither acidic nor basic. Alright, the next tool that you have is pH meter. Children, आपको ये pH मीटर के 2 नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में डालना होता है. उससे जो पॉइंटर होता है pH मीटर के वो कहीं जाके रुक जाएगा, and that will give you the reading of pH. Suppose the reading shows pH is 4, then you can say it is acidic, and if pH is 9, then you can say it is basic. pH is 7, then you can say it is neutral. So वैसे pH मीटर, pH पेपर आपको इंडिकेट करता है pH रेंज कितना होगा रफली. pH इंडिकेटर भी pH इंडिकेट करता है कितना होगा रफली. pH मीटर एग्जैक्ट pH देता है. So after knowing pH from these 3 tools, you can easily say whether the solution is acidic or basic. Alright? और आगे the 5th tool is indicators. Now indicators 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक या आर्टिफिशियल. करेक्ट? सिंथेटिक.
ओके, नेचुरल में कलर बेस्ड होते हैं, जो कलर से इंडिकेट करते हैं, और दूसरे होते हैं स्मेल बेस्ड, जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नाउ देखिए, कलर बेस में हम टर्मरिक ले सकते हैं। टर्मरिक वो येलो कलर का होता है, हल्दी पाउडर, उसको आपने सॉल्यूशन में डाल दिया और येलो हो गया, द सॉल्यूशन टर्न्स येलो, देन यू कैन से दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक। बट इफ सॉल्यूशन टर्न्स रेड, देन यू कैन से इट इज बेस। ऑलराइट, दूसरा रेड कैबेज। रेड कैबेज से आप एक्सट्रैक्ट निकालिए, रेड कैबेज देखा है आपने, उसका जूस निकालिए और उसको हमने सॉल्यूशन में डाला और रेड बन गया, देन यू कैन से दैट इज एसिड। लेकिन ब्लू बन गया, देन यू कैन से इट इज बेस। ऑलराइट, सो दिस टू indicators on color change base can determine whether the given solution is acidic or basic. All right children, अब स्मेल की बारी। आप क्लोव ले लीजिए, आपको पता है ना व्हाट इज क्लोव। ऑलराइट, क्लोव का एक टिपिकल स्मेल होता है, आप वो क्लोव सॉल्यूशन में डाल दीजिए। ऑलराइट, और स्मेल रिटेन हुआ, द स्मेल इज रिटेन, स्मेल गायब नहीं हुआ, देन इट इज एसिड। बट स्मेल इज लॉस्ट, वो क्लोव को सॉल्यूशन में डालने के बाद स्मेल इज लॉस्ट, क्लोव लॉस्ट इट्स स्मेल, तो वो बेस होगा। डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? उसी तरह नेक्स्ट इंडिकेटर ले लीजिए वेनिला। वेनिला का भी अपना खुद का टिपिकल स्मेल है, यदि स्मेल रिटेन हुआ तो वो एसिड है, और स्मेल लॉस्ट हुआ सॉल्यूशन में डालने के बाद तो वो सॉल्यूशन बेस है। ऑलराइट, द थर्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इज अनियन। तो अनियन का खुद का अपना टिपिकल स्मेल है, यू नो दैट स्मेल वेरी वेल। ऑलराइट, उसको सॉल्यूशन में डालने के बाद यस द स्मेल इज रिटेन, स्टिल द स्मेल वो आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक है। लेकिन अनियन को सॉल्यूशन में डालने के बाद अनियन ने अपना स्मेल गवा दिया, दैट स्मेल इज लॉस्ट, देन इट इज अ बेस। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? ओके, अब बारी है सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में एक है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन। ऑलराइट, और दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ऑलराइट, अब फिनोल्फ्थलीन में क्या होता है, आपने फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन में डाला और रेड कलर या पिंक कलर हो गया, तो दैट इज एसिड, दैट इज एसिड। लेकिन फिनोल्फ्थलीन आई एम सॉरी चिल्ड्रन, ये नहीं, ये मिथाइल ऑरेंज का है। इफ इट इज रेड और पिंक, मिथाइल ऑरेंज को सॉल्यूशन में डालने के बाद उसका कलर रेड या पिंक हो गया, तो वो एसिड होगा। और वो कलर येलो हो गया, एक्चुअली जो सॉल्यूशन हमने लिया है जो आइदर एसिडिक या बेसिक है, वो तो कलरलेस है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज के फ्यू ड्रॉप्स डालने के बाद वो रेड या पिंक हो गया, तो वो एसिडिक है। After putting few drops of methyl orange in the colorless solution, if it turns yellow, then it is a base. All right, children. अब फिनोल्फ्थलीन की बारी, right? Now जो colorless solution में आपने फिनोल्फ्थलीन के few drops डाले, फिर भी वो colorless ही रहा, then it is acid. लेकिन फिनोल्फ्थलीन डालने के बाद वो पिंक हो गया, then it is base. All right, so ये पूरा आंसर 3 मार्क का सही ढंग से नाइस प्रेजेंटेशन से आपको लिखना है। All right, that's the answer children. Okay, so proceeding further, we have a question from maths, triangles, that is similarity from Pratham. Here it's a figure based question. 2 figures are given to you, right? They look like geometrical shapes, right? Well, the question is, what is measure of angle R here? Well, if you observe at the first sight, you
It appears to us that these two figures are similar. लेकिन वो प्रूव करना पड़ेगा. देखो AB2 है और PQ4 है. सो AB अपॉन PQ लोगे तो 2/4 एंड रिड्यूस करोगे तो 1/2. BC और QR 3 और 6 दिया है. सो BC अपॉन QR is 3/6. रिड्यूस करोगे तो 1/2. सो first corresponding sides, ratio of first corresponding side is equal to the ratio of second corresponding side. And of course the included angle is right angle. Angle B is equal to angle Q. So SAS condition is satisfied. So here sides are in proportion, angles are congruent, quite a few number of angles are congruent. Can you see that? So you can say these two figures are similar. Figures are similar. So all corresponding angles are going to be equal. Angle C will correspond to angle R. So angle R will be also 60 degree. Clear, children? Okay. Now there is one question from Granth from statistics. This is of 9th standard. The median of this data, first observation 24, second 25, third 26, fourth x plus 2, fifth x plus 3, sixth 30, seventh 31 and next last one 34 is 27.5. Median M is 27.5 and the data is given. Find the value of x. Children, here number of observations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. And they are already arranged in ascending order. So ascending order. The data 24, 25, 26, x plus 2, x plus 3, 30, 31, 34. Children, here number of observation 8 is even. So याद करिए median की formula. Therefore, median, I am putting a word, median is equal to the value of pth observation plus the value of p plus 1th observation whole upon 2, where p is equal to n by 2, that is 8 by 2 and that is 4. So what is p? 4. So value of pth observation means 4th observation plus value of p plus 1 means 4 plus 1, that is 5th observation whole upon 2. Therefore, now I am putting symbol for median m, but that median is 27.5. Okay, whole is equal to 4th observation 1, 2, 3, 4th and this is 5th. So x plus 2 plus 5th observation x plus 3 upon 2. You got a linear equation in one variable x. बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका डबल हो जाएगा, that is 55 is equal to x plus x 2x plus 5. So 55 minus 5 is 2x. So 50 is 2x. 2 ones are 2, 25 is i.e. x is equal to 25. That's the value of x. Is that clear, children? Good. So here is the end of the query session. See you in the next query session. Till then, goodbye. Have a nice day, children.